what were the next steps that you took and moving forward, अगर हम थोड़ा सा आगे भी लेकर चलें तो प्रोफेशनल जर्नी में what were the challenges that you faced primarily? पहली चीज तो जो फैक्टर्स जिन्होंने मुझे ये हेल्प किया ये डिसाइड करने में कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है और किस डायरेक्शन में नहीं, सो दैट वाज जस्ट वन थिंग, दैट यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड you need to keep on exploring. So once you start, doing something, you get to know that either you can do it or not, or then you can look for something else, then you can look for something else. So तो मतलब आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं और ये चेक करना है कि for which job role or for which sector you are the best fit. So पहली चीज तो ये कि I kept on exploring those things, I kept on looking for opportunities, I kept on doing these things. और ये चीजें लाइक अगर कमिंग डाउन द इयर्स आई कैन टेल यू, सो ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत जल्दी आपको पता लग जाएंगी कि वंस यू डन विद योर ग्रेजुएशन तो आपको ये पता होगा कि आपने इस फील्ड में जाना है. सो इट मे टेक्स इयर्स इवन. सो बहुत सारे लोग, मतलब आज मैं जब बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, प्रोफेशनल से मिलता हूँ इवन, तो दे आर इवन लाइक विद हैविंग इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर 5 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी लोगों को ये नहीं पता होता कि यार हमने ये काम करना भी है कि नहीं है. सही है. सो इट कैन टेक मंथ्स फॉर समबडी, इट कैन टेक इयर्स फॉर समबडी, और इट कैन टेक लॉन्ग, राइट. सो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, अपनी वीकनेसेस को देखना है, और उनको देखते हुए इस चीज को डिसाइड करना है कि आप किस काम में बेहतरीन है. पहली चीज. दूसरी चीज जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट वर द चैलेंजेस यू लुक व्हाइल डूइंग द जॉब्स और एक्सपीरियंसेस. पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, नेगेटिव माइंडसेट और इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं. सो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सिखाना नहीं चाहेंगे, बताना नहीं चाहेंगे. So even though you need to survive, you need to get to your like place, or you need to make your place, और वो एक ही तरीके से है, वो है मेहनत से. So there is no shortcut, there is no short way. कोई ऐसा रूट नहीं है जिसकी वजह से आप जल्दी ऊपर आ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता अपना के आप जल्दी आगे निकल जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं. So you need to keep on working, whatever the consequences are, whatever the situation is, whatever the environment is. आपका काम है सर नीचे करें और मेहनत करें. So being Muslim, I strongly believe, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह पाक आपको किसी ना किसी स्टेज पे जाके जरूर रिवॉर्ड देगा, राइट. सो व्हेनेवर लाइक आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो मैं अपनी करियर के अर्ली स्टेज में बहुत सारी स्टेजेस पे बहुत ज्यादा लेट डाउन फील करता था, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था. सो पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सो मेरे पीछे एक सबसे बड़ी मोटिवेशन वो मेरी वालदा मोहतरमा. सो शी यूज टू से देयर विल बी अ टाइम, देयर विल बी अ टाइम, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मेहनत तो करो, मेहनत तो करो. सो बाय द टाइम यू कम अप टू रियलाइज कि नहीं यार, वाकई थिंग्स विल स्टार्ट ऑन वर्किंग फॉर यू. सो आपका काम है मेहनत करना एक राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट रह के. सो अल्लाह पाक आपको कहीं ना किसी तरीके से जरूर नवाजता है. Absolutely, absolutely right. And it would not be wrong to say that there is no shortcut to success, and we हाँ, need to have, एग्जैक्टली. a growth mindset with the concept of lifelong learning. That is something that we endorse at Amal Academy as well. एग्जैक्टली. So, Zuhair, moving forward, a lot of students who are watching us live and this conversation, they might consider going for abroad for higher educations after graduation. So, what recommendations do you have for them since you are already working in this niche and you have interacted with a lot of students? दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि व्हाट कैन हेल्प यू टू डिसाइड कि व्हाट यू आर बेस्ट फिट फॉर, राइट. सो आज के स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एटलीस्ट यू शुड हैव अ ईयर और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट टू गेट टू नो कि व्हाट यू कैन डू, राइट. सो अगर इफ समबडी हैज डन विद 16 years ऑफ एजुकेशन और ग्रेजुएशन कर ली है, सो उसको साल 2 साल 3 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए before getting into the education right away after completing the previous degree. सो उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में आते हो, आप मास्टर्स भी कर लेते हो और आपको पता लगता है कि यार नहीं, मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं, सो मुझे कुछ और करना था. सो तब तक टाइम गुजर चुका होता है, ठीक है. सो बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि वंस यू डन विद योर ग्रेजुएशन, आप साल 2 साल 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, जिसको आपको पता लगता है कि यार दिस इज द बेस्ट फिट फॉर माई सेल्फ, या मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये चीज बेहतरीन रहेगी. या फॉर एग्जाम्पल आपने किसी किसी फील्ड में काम किया और जॉब की, उसके बाद पता लगा कि आप प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मुझे जो है इसी फील्ड में मास्टर्स करना चाहिए. सो दैट विल हेल्प यू एग्जैक्टली टू डिसाइड वेयर यू वांट टू प्रोसीड
or in which direction you need to proceed. So ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पहली। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अंडरग्रेड के बाद जाना चाहते हैं या इवन इंटरमीडिएट के बाद अंडरग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। सो उनके लिए एक एडवाइस ये है कि कोशिश करें कि इन द लास्ट ईयर ऑफ योर डिग्री और इन द लास्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री स्टार्ट वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंटेशन और स्टार्ट वर्किंग ऑन द गैदरिंग इंफॉर्मेशन। So look for the right consultant, look for the right guidance seeker, और ऐसे लोगों से मिलें जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, एक्सपर्ट हैं उस काम के। उनसे मिलें, बिफोर टाइम चीज़ों को प्लान करें, प्रोएक्टिवली चलें ताकि डेडलाइंस मीट कर सकें और उन चीज़ों को टाइमली पूरा कर सकें। Right, right. Thank you. And one thing that you mentioned was documentation. So could you clarify about for our audience that what you particularly mean by that? I would be generally discussing documentation. For example, Right. if पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो अगर इंटरमीडिएट या ए लेवल्स करके स्टूडेंट फ्री होता है या पास आउट होता है तो वो अंडरग्रेड के लिए जाता है, और वंस यू डन विद योर Mm. 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सो आप मास्टर्स के लिए जाते हो, राइट। सो फॉर अंडरग्रेड आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, इसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स ए लेवल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, जो दो बेसिक जिनमें आपके टीचर्स मेंशन करते हैं कि हाउ हाउ डू दे नो यू, और किस तरह से वो आपको तस्वुर करते हैं कि what you are, right? Or there is a very important document which is named as statement of purpose या letter of motivation या letter of intent, जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं कि what you are, what you want to do, what your career aspirations are, or what you are looking for. So we as a consultant guide the students to get to the right professional statement of purpose or the letter of intent. उन सारी चीजों पे बेसिकली हम गाइड करते हैं और हेल्प करते Super. Thank you for elaborating on that, and I'm sure that this would be really, really helpful for हैं, डेफिनेटली। our audience. So, this brings us towards the end of our conversation, Zohair. So, looking back, what is one advice that you have for the current fellows of Amal Academy, like who are currently like doing even fellowship, or even all the students out there? Uh, Specifically for Amal students or Amal fellows, I would say कि focus on Amal fellowship as much as you can. If I can compare my like qualification or my 10 years of qualification and Amal experience, I would rate Amal's experience far way better than the 18 years of qualification. So the top institutes of Pakistan have not given me the enough skills to acquire the good job in the market, which Amal has given me within that 3 months experience. So I would rate Amal's experience always better than the other institutions. One thing, obviously, at Amal, you do not look into the curriculum or the basic requirements of the things. You do not study about the academics or the specific field. You discuss about the personality development, team skills, or the leadership skills, or the to get to know about the inner self, what you are, like self-actualization. So I would always suggest Amal fellows to keep working, keep striving, or keep focusing on this fellowship. This will help you a lot, inshallah. For those students who are not part of the Amal Fellowship, I would strongly suggest them to go for the Amal Fellowship. I normally do that. I normally ask the students. There are a lot of students or people who come to meet me on daily basis and ask for the guidance, or they couldn't identify themselves, or they couldn't find what is best for them or what is not. So I used to say that one should go for these sort of fellowships, so that you can have the idea what you want to do. And one more thing, either if someone is going for the Amal Fellowship or not, even someone is doing job, even someone is studying, one thing which is very important in someone's career is that is the consistency. That's it. So I strongly believe on one thing, that is to be remain consistent. So I have worked for like 22 hours from 24 hours. I've worked for sleepless nights. I've worked for plenty of weeks. So I have only learned one thing in my life, that you need to remain consistent. Results will start coming. True, true, absolutely. Totally agree with you, and thank you, Zuhair, for reiterating the fact that how important is it to stay consistent in our efforts. So this brings me to the end of our conversation, and as we bring this inspiring conversation to close, I want to take a moment to reflect on the incredible insights that you have shared today. So I would say that your journey has been a testament to power of resilience, the vision, and the willingness to adapt, and also being consistent in our efforts because that accounts for success. So, Exactly.
from navigating challenges in the educational consultancy to empowering, countless students, right? Your story reminds us that the impact the one individual can make when they pursue their passion with purpose. Yeah, And your exactly. story is a true example for that. Thank you. Thank you. Chana, super. And again, thank you so much for joining. So, to our audience, all those who are watching us live today, so I hope that the today's session has left you with valuable insights, lessons, and a renewed sense of motivation. So, whether it's starting your own venture, guiding others, pursuing your goals, or even doing any other activity in your life, remember that every challenge is an opportunity for us to grow. So, thank you again, Zohair, for sharing your journey with us, your story, your wisdom with us, and to everyone who has been a part of this meaningful discussion. So, let's carry the energy of this session forward as we continue to learn and support each other. And see you, inshallah, in the next Alumni Connect session. And until then, stay inspired and keep striving. And thank you, Thank you Zohair, so again much. for joining. Thank you so much for having me. Thank you so much for giving me this opportunity to speak about. And one last thing, Yeah, which I would really like to mention over here, for the graduates, for the students, for the professionals, during this current situation, that one should have the positive intent and the positive mindset. So whatever the situation is, whatever the factors are, whatever the current scenario is, the political and the economic instability of our country at the moment, but you need to remain very positive and you need to keep on working. Things will get better, inshallah. absolutely. Positive intent is magnanimous at this point in Yeah, our life. exactly. Thank you so So, much. Thank you. Thank you for having me on. thank you, Zuhair, and thank you everyone for joining us for this discussion. Inshallah, see you next time. Take Thank care. you. Allah Thank you. Take Hafiz. care. Bye bye. Allah Hafiz.